right, so it's a massive leap forward in ensuring equal rights for women irrespective of religion, caste, class and community. Well, the UCC came a step closer to fruition with the Uttarakhand panel readying its draft report for submitting to the government. Well, the Uttarakhand draft has given major indications about what the central law could look like, with the axe falling on several regressive practices, with women being at the receiving end of most. So what are the main features of the Uttarakhand Common Code draft, which in all likelihood will show the way for the pan-India UCC? The age of marriage for women will be increased to ensure that the girls are at least graduates at the time that they marry. Currently, Muslim women can marry when they are 15 or hitting puberty, which can even happen at 10 or 11 years of age. The age of marriage for all other religions is 18 years for girls. In the draft UCC, registration of marriage is made mandatory. Both spouses are given equal rights for divorce, which basically does away with the unilateral divorce rights of Muslim men. Now, significantly, a proposal has been made, according to sources, to completely do away with the practices of polygamy, halala and iddat, which are violative of human dignity. And finally, inheritance rights will be made equal for men and women, because currently the female heir of a Muslim parent gets half of what the male heir does. And Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami has welcomed the prelim UCC draft and says he hopes to see a day when a UCC is implemented across the country. However, the opposition asked whether this really is a uniform code if every state is implementing their own interpretation of a common civil code. आज मैं देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि रंजना प्रकाश देसाई जी और उनके साथियों ने आज कहा है कि हम लगभग ड्राफ्ट बनाकर हमने सारी तैयारी कर ली है, और जैसे ही वो ड्राफ्ट हमको मिलेगा, आप सबके आशीर्वाद से, देवभूमि की जनता के आशीर्वाद से, यहाँ के देवों के आशीर्वाद से उत्तराखंड में ये काम हम सबसे पहले करेंगे। तो हमारी अपेक्षा है कि देश के सभी राज्य इस दिशा में आगे बढ़ें। और यदि एक कॉमन सिविल कोड है तो फिर उत्तराखंड का कोड अलग, मिजोरम का अलग, केरल का अलग, गुजरात का अलग, उत्तर प्रदेश का अलग होगा। कॉमन सिविल कोड है, जैसा संविधान की भावना थी, जैसा नेहरू जी ने और अंबेडकर जी ने नीति निर्देशक तत्वों में समावेशित करवाया, यदि वो भावना है, उस भावना का कॉमन सिविल कोड है, तो फिर पूरे देश का सिविल कोड लाने की दिशा में सरकार क्या पहल कर रही है, बातचीत करें। तो ये जो है एक अलग अलग राज्यों के टुकड़ा कॉमन सिविल कोड कैसे है। So as far as the political war of words is concerned, it is of course currently underway, but the UCC panel has proposed a complete ban on the practice of polygamy. The panel has also proposed to completely abolish the practice of halala, where a woman was expected to marry another man and consummate the marriage before she can divorce him to remarry her previous husband. The panel also suggests a ban on iddat, a practice where a woman was expected to observe a certain period following a divorce or death of a spouse before she is allowed to remarry. However, many in the opposition continue to brand the move divisive and communal. Now that you have heard what the UCC draft has to offer, as far as the questions are concerned, of course, there are these questions if these charges still stick. But that, of course, remains a big question. And the political debate still continues over the UCC, and it has escalated further with the draft now coming in. When a parliamentary standing committee is constituted in the September of every year, the first thing the parliamentary standing committee does, that it decides its agenda for the whole year. Is the parliamentary standing committee being used in order to further the political agenda of the ruling dispensation? And if there is going to be a uniform civil code, what is going to be the status of the Anand Marriage Act? So where is the need for a uniform civil code? This is nothing but a dog whistle. कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ये डीसीसी है, डिवाइडिंग सिविल कोड है।
और ये बात हम बहुत पहले से कह रहे हैं ताकि लोग ये समझ सकें कि मुद्दा यूसीसी है ही नहीं। मुद्दा है देश के अंदर राजनीति को बांटना, लोगों को बांटना, लोगों के खिलाफ नफरत फैलाना। देखिए, ये इस पूरे एक्सरसाइज का एक ही उद्देश्य है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है, क्योंकि वो पिछले 10 सालों में जो कार्यकाल उनको मिला था मोदी जी को, उसमें कोई ऐसी उपलब्धि उनकी नहीं है, ऐसा कोई कार्य उन्होंने नहीं किया जिसको लेकर वो चुनाव में जाए। तो वो 2024 का एजेंडा तैयार कर रहे हैं एक तरह से। The same law commission earlier said it is not necessary and desirable at this time. That's what earlier law commission said. Now law commission has been asking opinions from all stakeholders. But Prime Minister made such a aggressive speech and it has infuriated all sections. There is no consensus, and if Prime Minister is so concerned for the women empowerment, women gender equality, let him bring the women reservation bill. Meanwhile, the Shiromani Gurudwara Prabandhan Committee has also appealed to the centre to reconsider on the implementation of the UCC. Remember, this appeal comes just days after the NCP President Sharad Pawar expressed concerns over the opinions of the Sikh community. ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੋਡ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪਛਾਈ ਤੇ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਚਰ ਆ ਤੇ ਜੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਲਚਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਜਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨਰ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਪਲਾਈ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਲਿਖੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। Meanwhile, the BJP has tried to assuage fears on the implementation of a common civil code and asserts that the centre is only going by the constitution. तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आधे दर्जन से ज़्यादा मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। शाहबानू का जो केस था, सरला मुदगल का जो केस था, इनसे और ऐसे और 3-4 केस है जिसमें कोर्ट ने बार बार इस बात को दोहराया है। फिर भारत का जो संविधान है उसके सेक्शन 44 के अंदर इस बात का उल्लेख है कि सरकारों को कॉमन सिविल कोड लागू करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। मोदी जी जैसे लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा कि जब से प्रधानमंत्री आए देश का नाम सम्मान बढ़ा, अर्थव्यवस्था में हो G20 का नेतृत्व, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जिसमें काम न किया मोदी जी ने। ये देश भारतवासियों का है। यहाँ एक वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई है, चाहे वो धर्म कोई बदल दिया हो लेकिन है तो भारत का नागरिक ही है। अब धर्म के आधार पर उसके साथ भेदभाव थोड़ी होना चाहिए। और कि धर्म के आधार, धर्म आपको जीने की कला देता है लेकिन संविधान उसके विकास की मुख्यधारा में जोड़ने। जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि मुसलमानों में सबसे ज्यादा गरीबी है, SC ST से भी ज्यादा गरीब हैं वो सब, तो अगर हमारी सरकार उन्हें अनाज दे रही, इलाज दे रही, मकान दे रही, कब तक देंगे हमको? विकास की मुख्यधारा में लाएंगे। तो अगर इस तरीके का कमीशन बना, रिपोर्ट दे रहा, भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ निषाद पार्टी खड़ी है। साल भर पहले प्रोसेस शुरू हुआ था और अब वो ड्राफ्ट आएगा तो सब के पास आ जाएगा और सब उसमें अपने सुझाव दे सकते होंगे। बाकी किसी और ने भी कोई आगे बढ़कर सुझाव देने होंगे और उनकी कमिटमेंट है कि हम UCC लेकर आएंगे। और असेंबली से पहले, चुनाव से पहले हम पार्टी ने हमारी ओर से कमिटमेंट की थी कि हम UCC लेकर आएंगे। उसमें ड्राफ्ट आएगा तो उसका स्वागत करना चाहिए।